चलो जी, आयशा आ जाएं। हाय आमना। हाय रीरा। हाय सना। हाय स्टार। आ जाओ जी। जी ओ मेरे हाँ एक सेकेंड। Go live with Ayesha. Ayesha, please accept. हाय। हाय। तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो भाई। I dressed up for Tinker's Collective, of course. अगर मेरे सर में ना दर्द होता तो मैं भी शायद ड्रेसअप कर लेती, बट मुझे इतना सर में दर्द हो रहा है कि मैंने सोच लिया है कि आज, क्योंकि आपको तुम लास्ट इंटरव्यू तुमने लिया था, तो आज तुम अपना इंटरव्यू भी लोगी मेरे लिए। ये क्या बात हुई? सही है सर। आज Can इट्स I योर डे ask टुडे। questions for myself? हाँ, कैन यू डू Or दैट? लाइक कैन maybe यू बी लाइक no, हाय हाय I think आयशा, दिस इज people आयशा, सच अ नाइस विजुअल आर्टिस्ट। हाय हाय आई एम आयशा। यू कांट डू दैट? okay, but people in the chat can ask questions. हमारे कौन कौन आ गए? ओके, हाय हाय फिजा, हाय अफसा, हफ्सा, और वो भी Hi, आ गई रीना। Garida. हाय मनाल, हाय आयशा। चलो जी, आमना, आयशा, हफ्सा, ब्रीरा। ब्रीरा ने हेलो भी बोल दिया। जबरदस्त। तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराने की तो जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज यू। You did the last interview. Maybe. You were Yeah. on this side of the table last time. I wish we had a table and we could do this like in person, but we can't. So Aisha is हमारी आज की फीचर्ड मेकर तो है ही है, वो तो है ही है हमारी फीचर्ड मेकर, बट आयशा इज ऑल्सो आवर विजुअल आर्टिस्ट, हमारी डिजाइनर। सो शुरू में जब हमने टिंकर शुरू किया था तो आयशा मेरी, शी इज ऑल्सो माई, अभी भी हो, हाँ, शी इज ऑल्सो माई स्टूडेंट। मैंने आइडेंटिफाई कर Yeah, लिया था। she's my advisor. आई एम नॉट योर एडवाइजर, आई एम योर टीचर। एम आई योर एडवाइजर टू? Yeah, yeah, you're my advisor too for my degree. लेट हुई तो मेरी गलती नहीं है। अच्छा, सो या मैंने इसको पहले ही पॉइंट देख लिया था कि यार ये बच्ची बड़ी टैलेंटेड है, और फिर जब टिंकर शुरू किया तो फिर मैंने सिर्फ इसको, तुमको ही सिर्फ भेजा था, और तो किसी को मैंने नहीं भेजा था ना कि हाँ जी हमारी डिजाइनिंग कर दो। हाँ, फिर पहले मैंने, फिर हमारी एक और वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हु इज लाइक माई टॉपर, मैंने कहा कि उसको पहले हायर करते हैं, फिर मैंने आयशा को कहा, और फिर आयशा ने टॉप कर लिया। सो नाउ आई हैव 2 टॉपर्स in my class. But yeah, That's an Aisha is accident. I don't know how. there was no favoritism. In fact, I was so surprised. Yeah. I was so surprised कि हाय ये तो मेरे लिए काम कर रही है और इसके अच्छा स्कोर भी आ गया है कि I had to do something which I would normally not do. मैंने दोबारा पेपर चेक किया strictly. And she downgraded me. Why did you have to downgrade me? बनता था। वो देखो बरीरा हा 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 कर रही है, पर अंदर से बरीरा सोच रही होगी कि यार ये क्या हुआ? Sorry, अच्छा जी, कितने लोग आ गए? We have 9 people. अभी 9 लोग आ चुके हैं। Should we start? हाँ, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। exactly. So, Okay, तो so आयशा का इंट्रो तो तुम्हारा जो है वो हमने आपके पोस्ट पे लिख दिया था। आयशा ऑल्सो वर्क्स फॉर अजीब स्टूडियोज विच शी लव्स दैट जॉब, और टू मच, शी लव्स दैट जॉब टू मच के कभी कभी ऐसा होता है कि वो उनके लव के चक्कर में जो है ना हमारा काम कभी कभी थोड़ा सा मतलब मैंने कहा था कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी, सो वी वोंट टॉक अबाउट दैट। हाँ, तो टेल अस अबाउट योर, आयशा अपने बारे में बताओ ना थोड़ा सा हमको, बिकॉज मैं तो जानती हूँ, बाकी सब नहीं जानते। I'm a graphic designer, and recently I started calling myself visual artist because I think कि मेरा जो काम है वो थोड़ा आर्ट की तरफ जा रहा था, तो फिर I changed my title because, but I don't know, it still sounds pretentious to call yourself a visual artist at this point. नहीं नहीं, बिल्कुल But क्यों anyways, नहीं। मैं उस दिन ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है, जिसको टूल आता है ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल, मतलब कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करने आते हैं, राइट? और विजुअल आर्टिस्ट क्या होता है? विजुअल आर्टिस्ट वो होता है जो आर्ट बनाता है, क्रिएटिविटी होती है जिसकी, जो अपना अपना नया आइडिया, अब वेदर यू यूजिंग डिजिटल टूल्स फॉर दैट, वो तो फर्क नहीं पड़ता ना। व्हाई शुड यू कॉल योरसेल्फ जस्ट मतलब
call yourself an artist. Why not? Yeah, but anyways, I still uh, oh, why is my voice echoing? I don't know. Is it echoing? Is it It because of the pankha? I don't know, but it just started echoing. Bilkul, nothing changed at my end. Okay, but it's okay. Okay, अच्छा try करो हो जाएगा I फिर. started designing 2 years ago, and but I was not doing professional designing. I was just volunteering here and there, usually for societies and NGOs that were around me. जो मेरे म्यूचुअल्स की थी उनको खुद ही मैसेज करके कहती होती थी कि आप मेरे से काम करवा लो. I work for free because since you are running an NGO, so I'll redesign your logo. I'll make this ad for you and stuff like that. So I was just doing it for fun back then, and I wasn't that serious about it. But okay, so but when I got to know about designing, मुझे बस पता लगा था कि मैंने जिंदगी में करना एंड पे यही है. I want to become a designer. Even if I'm doing anything else, जैसे मेरी business marketing की degree है, so even if I'm doing job related to that or doing anything else, I still want to design on the side. मुझे ये बताओ कि Okay, कैसे पता चलता है, like at your age, how do you know whether this is just a hobby, like a side gig, or I want to do this like as a career? मुझे ये समझ नहीं आता कि how do you decide, like what is that aha moment, or you know when it like sort of strikes you कि यार ये मुझे करना चाहिए as a career? yeah. So what happened is start में जब मैंने designing start की थी तो of course मुझे इतना कुछ नहीं आता था, but still the process of making something, it just intrigued me in designing. I really like studying and I like that academic stuff too, but the aha moment was when I got to know there was this assignment I got to design a website, just the visuals. तो अब मैंने उसके लिए रिसर्च की थी और मैं बहुत ज्यादा इंट्रीग हुई कि अच्छा व्हाट्स द होल प्रोसेस ऑफ इवन नेमिंग योर ब्रांड and then coming up with the logo and then a theme and the fonts that matter in the whole look of it. I don't design websites, but that was just an assignment which जिसके बाद मैंने decide किया था कि I just want to be a graphic designer and that's it. And I was But not did even in my university तब. नहीं तो मुझे ये बताओ ना कि like how do you start, like for somebody who wants to, उसने देखा कि जी बड़े मजे, did you get inspired by somebody or was it like generally like ads देखे या graphic design, मतलब No, design हुई not थी? at all. The story is actually accidental. I was on my gap year and I was looking for foreign language courses. जैसे Chinese हो गई या maybe German. I just wanted to learn something because I was free. So I found this company PNY trainings at Urfa Kareem Tower. तो वो चाइनीज का कोर्स ऑफर करते थे तो मैं उनके ऑफिस चली गई. मैंने कहा मुझे ना चाइनीज में रजिस्टर कर दो. तो दे वेंट लाइक वो तो अब नहीं हो रहा बट वी हैव दिस कोर्स गोइंग ऑन विच इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग. आई डिडंट नो व्हाट द टर्म इज. मुझे कुछ भी नहीं पता था. तो मैंने कहा हाँ अच्छा हाँ उसी में डाल. हाँ एग्जैक्टली. आई वाज लाइक हाँ हाँ डाल दो. It's fine. What do I need for that? They were like, you just need a laptop. That's it. So I was like, okay, डाल दो उसमें. And I went and they installed Photoshop in my laptop. और Photoshop का खैर मैंने नाम सुना हुआ था, of course, but it was like paint for me. तब से स्टार्ट में तो वो इसी तरह सिखाते हैं जैसे बचपन में हम स्क्रिबल करते होते थे उसके ऊपर पेंट के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट पेंट के ऊपर. बट when I started making things तो उन्होंने मुझे बताया अच्छा लोगोज इस पे बनते हैं, इस पे सारी ब्रांडिंग होती है और ये इस तरह के टर्म्स और ये पेप्सी का आपने रीडिजाइन देखे लोगो, ये इसके ऊपर सब कुछ होता है. This is the money they made. Okay, the money factor counts a lot for me, and I still remember they were like ये जो redesigning हुई है ना ये कम से कम 5 करोड़ की होगी. I was like wow. कहाँ 5 करोड़ की. पता है तुम्हें मेरा जो सारा एक्सपीरियंस विद ग्राफिक डिजाइनर्स है, मैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में होती थी, सो my obviously my colleagues used to be graphic designers, right? Lots of them.
उन बेचारों की क्या जिंदगी थी यार, ख्वारी ख्वारी थी। मतलब एक इमेज को रेंडर करने के लिए जी वो घंटे लग रहे हैं जी, वो आर्ट वर्क कन्वर्ट करना है तो वो जी बैठे हुए रात को 3-3 बजे घर जा रहे हैं जी, क्लाइंट बोलता है कि चेंज कर दो, अब वो इतनी हैवी फाइल होती है उसमें चेंज करने में फिर इतने घंटे, मतलब बिल्कुल ख्वारी वाली लाइफ थी। तो मेरे दिमाग में ग्राफिक डिजाइन जब व्हेन आई वाज वर्किंग इन द इंडस्ट्री, तो इस तरह का इमेज था कि यार आई डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड दे डोंट गेट पेड अ लॉट। योर इमेज इज बड़ी, ये आपकी क्लियर इमेज है, क्योंकि ये ऐसा ही है अभी भी कुछ हद तक इसी तरह है यहाँ पे। बट अब तो खैर फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज निकली हैं, तो वी कैन स्टिल डू स्टफ ऑन द साइड एंड वी कैन मेक समथिंग आउट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन एजेंसी लाइफ में तो बिल्कुल जैसे आपने डिस्क्राइब किया ऐसी है। इट्स नॉट द डिजाइनर्स हु आर मेकिंग मनी, इट्स द एजेंसीज हु आर द क्रिएटर्स मेक एक्चुअली। मोर मनी देन द डिजाइनर्स डू। डिजाइनर्स बेचारे जो है वो बस एक कमरे में बैठ के घंटों 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 बैठ के एक ही डिजाइन पे लगे होते हैं। You know what? उस तरह की फुलफिलमेंट पता है क्यों नहीं होती? क्योंकि आप क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे होते हैं, which is why I said कि यार ग्राफिक डिजाइनिंग अलग होती है। विजुअल आर्टिस्ट मीन्स कि यू हैव द फ्रीडम टू मेक आर्ट, टू क्रिएट व्हाटएवर यू वांट टू। अपनी इंस्पिरेशन हो, अपना डिजाइन हो, obviously you need to have an audience for it, but like even if you don't, you can still make art, and that's what differentiates वो जो graphic designer बेचारा जो who's toiling away at the computer trying to sort of convert, make an Yeah, I artwork. remember you advised me in my first class that don't become a graphic designer, become a visual artist, Aisha. Call yourself an artist. फर्क होता है। You should aim to be an artist, not a designer. And yeah, that hit me up because काफी हद तक ये बात बिल्कुल सच है कि if you aim to be a visual artist, then एक आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग होती है ना, ओके ये बिल्कुल। काम है, ये इसी में किया। हाँ, वो यूजुअली इफ यू आर डूइंग सोशल मीडिया पोस्ट ओनली एंड ब्रांडिंग कर रहे हैं आप कुछ, तो इतना नहीं पता चलता, ठीक है, कि ये अच्छा ये इसी आर्टिस्ट ने किया होगा, अनलेस यू हैव बीन इन द फील्ड फॉर years and years and there's a style that you have developed and name जो बाहर अब निकल गया हुआ है। बट यस, और जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, मे बी इट्स ग्लोबली टू, designers or visual artists, they should aim for multiple streams of income, not they shouldn't rely on their job only, because अब things have changed, and especially जब से COVID आया, jobs are not giving you any security either. हाँ, जब आप आर्टिस्ट होते हो, स्पेशली विद लाइक आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि वैसे भी बिजनेस में भी, लाइक व्हेन यू आर एंटरप्रेन्योर यू हैव मोर फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट एंड यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड यू कैन मेक योर ओन मिस्टेक्स। व्हेन यू आर वर्किंग फॉर समबडी एज एज अ डिजाइनर, देन यू हैव लिमिटेशंस, राइट? वो आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो जो उनके उन्होंने आपके लिए जो एक बाउंड्री बनाई होती है, जो उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो दिस इज हाउ यू अवॉइड इंस्ट्रक्शंस from people by not working for, not that I'm discouraging it. I think it's great. Advertising agencies को जरूरत होती है, marketing में जरूरत होती है, but like it's also like with my kids, I would advise them to be more independent when it comes to their art than to work for corporate brands or whatever. मतलब at least as part of an agency. अच्छा, मुझे अभी तुमने कहा था कि style होता है define, अगर आप अपना style कर लें. Let's come to that. So yeah, what your style is quite, as far as I'm concerned, it's quite different from what I'm used to. I don't get it. It's called, I forgot. It's called Wacky. No, it's called, that's how we named Wacky Witness. Remember, I saw your designs and I'm like, we should have a day for stuff like this, because all you cool kids are making all these nice, trippy art, and I can't fit it into maybe Theme Thursday or something like Motivational Monday, because sometimes it's very dark and or even sellers, whatever, because sometimes you just make it for fun or because you want to, right? So फिर हमने Wacky Wednesday नाम रखा था, because just wacky. Yeah, define करो अपना style. हाँ. My artwork, अच्छा, पहले मुझे psychedelic art बहुत पसंद आना शुरू हुआ था. I wanted to make things जैसे आपके आंखों को दर्द हो. I'll show you something. हाँ, thank you जी, thank you. You've been successful. वो उस बेचारे की आंखें ही खत्म हो, उसका आंखें तुमने खत्म। Please show it to us again, आंखों को दर्द उसका। Yeah, I'll show you. But it's a really nice। लगी थी बीच में।
ओके सो ये मैंने बनाया था फॉर आई वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कोर्स. तो ये मैंने बना के आई सॉ दिस पेज आर्टिस्ट फॉर फ्लड रिलीफ. और वो दे वर आस्किंग फॉर सबमिशंस के artists should, even if they're amateur, if they're professional, जो भी हैं, जिस तरह के भी, they should send us their artwork and we'll get them digitally printed and donate all the money for Karachi में जो flood आया था अभी उसके relief efforts के लिए. So I just sent it, and apparently 6 of the people bought this artwork for Wow. this, and It was like a poster? it raised 30,000 rupees, I guess. So 30,000 I kya? was Sorry, you made 30,000 bucks? No, I didn't make it. Of course, artists for flood relief ने उसको raise किए थे the money, and they used it for relief efforts in the Karachi. अच्छा, जबरदस्त. Karachi flood. हाँ. So that's when I got to know, oh, maybe people like my artwork. Maybe there's a market who wants to buy it to be shipped. So yeah, that's how I got motivated to make more artwork, and I kept experimenting with different styles, but currently I really like the vaporwave vibe and rave art vibe. I look for inspiration here and there. So फिर I discovered I was actually looking for कि अच्छा ये एक specific art style था. There's a page on Instagram, Dread Labs. उनका कौन सा? मैं Sorry, chat में what's it लिख called? दूँगी. हाँ, chat में लिख दो. Yeah, I'll just write it. Yeah, so they were making very cool stuff on Instagram, and I just couldn't figure out के what is this style called. तो मैंने उनका फिर जाके मैंने उनके पोस्ट पे जाके ना उनके हैशटैग सर्च किए कि अच्छा ये इनमें से कौन सा हैशटैग जो है ना वो ये इस आर्टवर्क को डिस्क्राइब करते हैं. और फिर उसको मैंने गूगल किया जाके, टर्म्स को 3-4 उन्होंने टर्म्स यूज की थी. देयर वाज दिस टर्म कॉल्ड रेव आर्ट. तो देन आई गॉट टू नो, ओके सो रेव आर्ट इज जो रेव्स होते थे पहले इलीगली, उसके जो पोस्टर्स बनते होते थे. तो okay, is that Ilma? You can hear her? Is that Ilma? Yeah, in the background. But she's outside. I don't know why she's loud enough. She wants to be heard too. I think उसका interview करेंगे next time. हाँ ठीक है. Aksha says your work is so cool. एक second. Oh my God, your work is so cool in all caps में. तो Aksha is like shouting it out. और Aksha is like, Aksha will cover करना चाहिए. We should do a feature on you. You are one of my favorite photographers. Barira is like, ha ha ha. But Barira is laughing all through your interview. So Bhavesh is like, what nice. Numan bhi aa gaya. Oh, like Numan is here too. Bag.tk. Remember? Nice. Hi Numan. Yeah. बहुत सारे चलो जबरदस्त. Great. Ayesha, I can't wait for you to earn shit. दुआ करते रहना. Ayesha, Barira, there's a typo. You know. Lord Clarence shall be mentioned. Kareem bhi aa gaya. Yes, Kareem is right. Yeah. Who's Lord Clarence? Okay, so there's this artist. He's a very cool artist, Clarence. You can say just the name लिखे Clarence. It's his username as well, so you can search it. He does experimental design as well, and he inspired a lot of the people who are following me to make that trippy shit I make. So yeah, when you go like okay, Kareem ka kaam is very similar to mine. It's because there's this Lord Claren, the artist we all follow. We actually follow his tutorials and stuff. Yeah. Nice. So अच्छा मैं honestly मैं हैरान थी कि इस ट्रिपी आर्ट की, रेव आर्ट की, या जिसको तुम एक और तुमने नाम लिया था, I forgot. अभी जो आज हाँ वेपरवेव. मुझे जो है ना बड़ी हैरानगी हुई थी कि इस तरह की चीजें अब मतलब बिक रही हैं. बिकॉज हम लोग ऑब्वियसली मैं एक पुरानी आई एम प्रोबेबली लाइक उस तरह से नहीं था हमारा वो.
तो बड़ा और फिर तुमने बताया कि म्यूजिक वीडियोस में भी लोग बहुत यूज करते हैं, विच इज समथिंग दैट यू आई थिंक हाँ तुम पेड वर्क भी करती हो. I think it's fascinating how like things have changed and evolved and you know लोग कभी कभी मुझे वो आता है हंगर गेम्स में वो जो उनकी जो होते हैं ना वो जो सोसाइटी होती है पूरी. तुमने हंगर गेम्स देखा हुआ है ना मूवी? See those people like the rich people and they're all like over the top and colorful and yeah, हाँ मुझे exactly. मेरे दिमाग में ना इस तरह के इमेजेस आते हैं when I look at all this मतलब Yeah, okay, so colorful whatever, dazzling vivid yeah, bright. whatever the artwork people are making, हमारे इर्द-गिर्द भी, I'm talking about the Pakistani artist community, there's always market for that, but it's not जरूरी नहीं है कि वो जो आपकी मार्केट है वो आपको पाकिस्तान में ही मिले, बिकॉज हाँ अब जो है वो ग्लोबल हो गया है सब कुछ, एंड वी शुड एम फॉर ग्लोबल रीच, नॉट लोकल, क्योंकि फिर लोकल में आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी जब आपको अपनी मार्केट ही मिलेगी यहाँ पे. मुझे ये बताओ ना कि ये जो दिस सॉर्ट ऑफ वर्क यू डू इसकी आइडियल टारगेट, बिकॉज आई एम श्योर देयर आर अदर पीपल हु वांट टू डू द सॉर्ट ऑफ वर्क यू डू, उनकी भी सेम एस्थेटिक है राइट, सेम स्टाइल है, बट दे आर प्रोबब्ली कंफ्यूज या उनको नहीं पता होता कि यार हम इसको करेंगे क्या, लाइक वेयर डू वी सेल इट, लाइक हाउ डू वी मेक मनी आउट ऑफ इट राइट. तो तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह की इंडस्ट्रीज या किस तरह के कैटेगरीज हैं जिसमें इस तरह का आर्ट, किस तरह की कम्युनिकेशन जिसमें इस तरह का आर्ट जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा या उसके लिए मार्केट होगी, लाइक इसकी आइडियल टारगेट मार्केट डिफाइन अगर करो सेगमेंट्स तो क्या है? तो आई थिंक जिस तरह का आर्ट वर्क मैं कर रही हूँ, द एक्सपेरिमेंटल वर्क, द कोलाज आर्ट एंड ऑगमेंटिंग ऑल द कलर्स ऑफ विजुअल्स, तो ये इन सब की जो टारगेट मार्केट है, दिस इज रिलेटेड टू म्यूजिक इंडस्ट्री, ठीक है, स्पेशली द इंडी म्यूजिक इंडस्ट्री. और ये सब कुछ मैंने स्टूडियो में काम करके सीखे कि okay, so my target market is not the usual people who want artwork for themselves. It's the people who want to promote their music. अब जैसे if there's a still artwork, so उसको आप animated GIF बना सकते हो for Instagram promotions, for Facebook promotions, और ये बहुत यूज होता है. And then there is Spotify Canvas, जो कि अब लोकल भी यूज हो सकता है, बिकॉज Spotify Canvas. अच्छा, what is that? हाँ, ओके, सो इट्स जब म्यूजिक आपका रिलीज नहीं ना होता, अभी प्री लॉन्च ऑफ द म्यूजिक, देयर इज दिस 3 to 8 seconds की ऑप्शन कि आपका एल्बम कवर के बजाय विजुअल्स 3 to 8 seconds के नजर आ रही है ऑन द होल स्क्रीन. अच्छा, ठीक है, instead of like a static. हाँ, so it's more engaging, and instead of just looking at a still artwork वो भी square size में, वो full screen होता है, तो it's also used on TikTok because वो वही size होता है. हाँ, you can use it on TikTok as well. तो हाँ, वो you can just make artwork and make it into an animated GIF, उसके colors आप change कर लो, like उसको वो वीडियो बन जाए, उसको आप बड़ा छोटा कर लो एलिमेंट्स को, सो इट हैज अ मार्केट टू, एंड आई थिंक पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, स्पेशली जो आर्टवर्क्स बना रहे हैं, जो बेशक विजुअल्स नहीं बनाते, वीडियो विजुअल्स नहीं बनाते, द स्टिल आर्टवर्क जो बना रहे हैं वो दे कैन यूज Spotify Canvas का अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अब Spotify लॉन्च हो गया पाकिस्तान में भी, लोकली भी सिंगर्स को रीच आउट कर सकते हैं. और सेकेंडली जो म्यूजिशियंस हैं, द यंग टैलेंट इन, हमें इंस्टाग्राम पे बहुत सिंगर्स नजर आते हैं अपने इर्द गिर्द भी, तो आई थिंक आर्टिस्ट शुड कोलैबोरेट विद देम and reach out to them. Okay, let us make artwork for your music, ठीक है, and of course I don't encourage doing it for free, but आप देख सकते हो कि आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस हिसाब से, बट यू शुड डेफिनेटली रीच आउट टू पीपल खुद. हाँ, इस तरह की कोलैबोरेशन, वैसे भी उनके बजट्स इतने हाई नहीं होते हैं, और तुम लोग भी मतलब इट्स समथिंग दैट दे कैन अफोर्ड एज कंपेयर टू लाइक शूटिंग अ वीडियो बहुत लंबी चौड़ी, उसकी एडिटिंग और ये उससे बेहतर तो ये है कि आप इस तरह का उसमें आर्ट इनकॉर्पोरेट कर लो, और कूल भी लगता है, इट लुक्स नाइस टू. आई मीन आई सॉ सम ऑफ द वीडियोस दैट यू मेड एंड आई मीन दे डू लुक नाइस, दे हैव दिस अपील
and there's this huge market for it amongst ये तुम्हारी जो generation है, ये जो आपकी Gen Z कह लो, जिसमें इसकी काफी बड़ी market है. It does resonate with them. अच्छा मुझे ये बताओ कि we were discussing this कि obviously तुम business की degree कर रही हो and on the side you're doing art and the sort of style that you have and how exactly. तो फैमिली क्या कहती है कि बेटा आप आर्टिस्ट बन जाओ, बेटा तू एमसीए चली जाती बेहतर होता, या बेटा बिजनेस पे फोकस करो, क्या सीन क्या है ये बताओ ना जरा. Yeah, okay. So I like business studies बहुत पहले से, since I was in school. And of course, I had the option to go to an art school instead of a business school. But I have this love for academics as well. तो फिर मुझे था कि नहीं और मैंने ये करना. And और तब मैं एक artist नहीं थी. I started designing तब और I wanted to study business. मुझे वैसे मार्केटिंग का नहीं पता था. I didn't know any terms, but I just wanted to study business. इसलिए I chose. I was like okay artist तो हाँ. और मेरी अम्मी भी कहती है ना कि कहती है artist तो बेटा बनता रहता है बंदा साथ साथ. हाँ मतलब ये तो साइड का होगा, ऐसी होते हैं ना, शौकिया करता है बंदा, आर्ट चार्ट बना लेता है, इसमें कौन सा कोई मतलब करियर बनता है. हाँ लेकिन फिर कन्विंस कर लिया क्या, मतलब कन्विंस कर लिया माँ बाप को कि मैंने आर्ट ही करना है, ये बिजनेस डिग्री तो मैं वैसे ही कर रही हूँ ताकि मैं अपना आर्ट जो है वो प्रमोट कर सकूं. या पहले मेरे को इतना कोई खास समझ नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ. बट व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब एट अजीब स्टूडियो तो उन्होंने फिर मेरा थोड़ा आर्ट वर्क देखा, उनको थोड़ी समझ आई कि अच्छा ओके शी इज अर्निंग थ्रू आर्ट, मे बी कुछ कर रही है ये. सो दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ इट एज ऑफ नाउ. और बाकी I started freelancing too. So yeah, I'm looking forward कि उसमें भी मैं थोड़ा expand करूँ. क्या है तुम्हारे entrepreneurial, because obviously I keep pushing you, मुझे तो लगता है कि तुमको, but what are your plans? Do you see yourself as an entrepreneur? Do you see yourself as working for somebody, which obviously I'm against, but whatever, like what's your plan? Where do you see yourself? I would in the long term I want to be a freelance artist. That मतलब मैं contract based काम करूँ instead of if I'm working with an agency or a business or a client तो मैं contract basis पे बस उनके साथ काम करूँ. I don't want to continue doing working. Have you ever thought about like sort of having your own sort of digital agency, or because from the market obviously you combine art with your skills. I lack leadership skills. Sorry, आपका इंटरनेट जो है ना रुक गया है. Is it mine or is it Ayesha's? Hello. 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 Sorry, नेट रुक गया था. I'm sorry. Was it yours? Stuck हो गया था बीच में. Yeah, it was probably mine. अच्छा हाँ, well you were saying something about you lacking leadership skills, and I was going to give you a piece of my mind after that. Could you finish your sentence and so I can like continue? Yeah, okay. So I believe that I don't have those leadership skills. मैं बहुत जल्दी दब जाती हूँ. और थक जाती हो या दब जाती हो? हाँ, और मैं लोगों से मुझे काम नहीं निकलवाना आता. मतलब I don't, मेरी इस तरह की नेचर है कि अच्छा किसी से भी कुछ नहीं हो रहा ना तो इंस्टेड ऑफ गाइडिंग देम सही तरह मैं कहूँगी मैं खुद ही कर लेती हूँ. मैं इसको खुद ही कर लेती हूँ. तो आई थिंक ये एक अच्छी बात तो नहीं है. और नहीं, लेकिन obviously आप evolve भी तो कर रही हो. You're just in your early 20s, you're evolving. I mean, there's so much time for you to evolve. I mean, बंदा पैदा तो लीडर नहीं होता ना. Unless you're like boss baby or something, but like maybe I have a long way to go to reach that point कि मैं lead करूँ एक टीम को या direction दूँ. तो I believe कि मेरी I still have a long time to reach there. अच्छा, आयशा का पर्सनल ब्रांड अगर तुम डिफाइन करो, अगेन इट्स अ मार्केटिंग क्वेश्चन एंड देन यू गॉट एन ए इन माय कोर्स, सो आई एम श्योर यू नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन. आयशा का पर्सनल ब्रांड अगर तुम डिफाइन करो तो वो क्या है? लाइक हाउ वुड यू डिफाइन योर आइडियल
brand? You know, जैसे तुमने you mentioned this artist in your caption, मतलब वो जो तुम्हारा intro हमने लिखा था profile लिखी थी उसमें you mentioned an artist कि उसने तुमको inspire किया. Obviously उसकी एक brand persona है. What's yours? Like, how do you see yourself? Like, you know, as a fully developed brand. जब होगा. Okay, my brand is young. It gives off the vibe of very indie vibe probably, but not music related. Okay, so it's wacky, I guess. Sorry, it's a 5-point question. This is going to make or break your grade. It's 5 or 10. No, You can let's do 10. हर चीज का 5% बोनस में रखना होता. Honest. सोचो ना इस बारे में. I mean, सोचो, because obviously बहुत जरूरी होता है. When you're a visual artist, you're an entrepreneur of yourself. Like आप खुद एक business हो. एक तरीके से देखा जाए तो तुम एक brand हो. You're selling yourself, right? So जैसे हम marketing में भी define products के लिए हम define करते हैं कि यार ये इसकी personality है, ये इसका promise है, ये इसका image है जो हम build करना चाहते हैं. This is the sort of positioning a product has, right? उसी तरह से तुम, because you are the product बोलना तो नहीं चाहिए, but you are the brand, right? So obviously you have to define these for yourself as well. ताकि तुम सही track पे आगे जा सको ना. Obviously, मतलब this is just at the start of your journey. If you get these things right, तो फिर develop करना आसान होगा अपना जो track develop कर उस पे चलना आसान होगा. So you have a well defined sort of strategy. इसलिए मैं पूछ रही हूँ. उज़ैर हमारा objective है to make shitloads of money. We know that. So that's the marketing objective. मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे 90% लोगों का यही ऑब्जेक्टिव है, but they are very embarrassed to say it aloud. हाँ, हम आर्टिस्ट हैं, हम पैसों के बारे में नहीं सोचते हैं. हम फिलोसॉफिकल की वजह से बस काम करते हैं. Everybody wants to make money, भाई. ऐसे ये सब टोपी ड्रामा है. सब पैसा कमाना चाहते हैं. Almost everybody. Unless like they're rich already. The sooner you acknowledge it, the better it is. क्योंकि then you can focus on that. Easier to sort of follow the right track. We get on the right track, yeah. वरना इधर उधर आप सर मारते रहेंगे. नहीं, मैंने पैसा तो नहीं कमाना, but आपकी आंखें पैसों पे ही होंगी. You will like, नहीं, मैंने तो नहीं कमाना है. क्योंकि ये भी है. एक तो ये कि आपको फिर पता चल जाता है कि ओके, जो अगर मैं ये जॉब करी हूँ, so it's wasting my time. There is no growth here. अगर पैसे नहीं है तो ग्रोथ तो एटलीस्ट होनी चाहिए ना. तो अगर ग्रोथ भी ना हो, पैसे भी ना हो, तो फिर आई थिंक कोई मकसद नहीं है उधर रहने का. और इफ यू आर वर्किंग विद द क्लाइंट और उधर भी देयर इज नो नाइदर मनी एंड नॉट ग्रोथ, तो फिर you shouldn't be wasting time on those people. ये starving artist का idea बिल्कुल फजूल है. You have to make money by the end of the day. बिल्कुल, you have to make money, वरना आपको कोई फायदा नहीं होगा आपके आर्ट से बाद में लोग. यही हम पिछली इंटरव्यू में भी बात कर रहे थे कि अपनी जिंदगी में कमा लें, बिकॉज बाद में अगर कोई आपके आर्ट को बेच के कमाएगा तो आपको कोई खुशी नहीं होगी. आप अपने कबर में जो है ना वो पलट रहे होगे कि यार ये क्या हो गया. बेहतर है अभी मनी 24/7. उज़ैर लाइक मनी 24/7. सोते हुए भी मनी के ख्वाब देखती है. Yup, I think about it. Uzair कह रहा है, yup, I think about it. Uzair जो है runs this amazing initiative. It's called Wonder Women International. Wonder Women क्या? Yeah, I'm the community manager for Wonder Women, and you guys should follow it. I'll write the username here. So it's a startup for. It's a really cool startup. I'm so proud of this boy. इसने ऐसी मशीन्स इंस्टॉल की हैं कैंपसेस पे, यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे, जो सैनिटरी नैपकिन्स डिस्पेंस करती हैं. सो लाइक यू नो मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि गर्ल्स लाइक डोंट, एकदम से सडनली देयर लाइक ओ इट्स माय टाइम, एंड देन दे डोंट हैव पैड्स ऑन देम, एंड देन दे रनिंग अराउंड आस्किंग फ्रेंड्स, टीचर्स. मुझसे भी बहुत दफा लड़कियां पूछ चुकी हैं. सो इस मसले को, एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम, ये बहुत दफा होता है. तो उन्होंने जो है ना वॉशरूम्स में आपकी मशीन्स इंस्टॉल कर दी है कि भाई कोई मसला ही नहीं है, आप जाएं मशीन में से निकालें, खत्म बात आपकी. मतलब इट्स मेकिंग इट लाइफ सो मच इजियर. You asked this question about the entrepreneurship thingy. तो आई थिंक दैट ये बात वहाँ पे रेलेवेंट होती है कि although I don't see myself as an entrepreneur, but startups attract me a lot, NGOs attract me a lot, social entrepreneurship attracts me a lot. तो मुझे जहाँ पे opportunity मिलती है, I try my best to contribute in those initiatives. That's great. अब तो वैसे भी entrepreneurship, triple bottom line, we've read about triple bottom line, and every business has to be ethical, has to take care of
the environment or society. Obviously profitability भी आपने देखनी है, but अब तो ये एक intrinsic part, important essential sort of requirement है for any sort of, so every business is kind of socially. reason बताऊंगी कि the artists and designers या जो भी आप creative field में यहाँ पे हो, if you are working with the usual clients या आपके customers हैं, वो बहुत monotonous हो जाते हैं in the long run. So you should especially reach out to Generation Z startups. Generation Z startups मतलब which are very young. Abhi the startups who have just started or who are run by Generation Zers, उनको खुद reach out करें, उनको offer your services at maybe half price, or maybe if you want to give them consultation for free, or if you want to even for paid work, if they can afford it, they have the investment, you should reach out to them खुद. Because फिर आपका पता है जो work flow हो जाता है बड़ा monotonous हो जाता है. You're going on a 9 to 5 job, and maybe if you're just freelancing for the big clients, so इतना it's not very adventurous. तो उसको भी साथ साथ उस तरह से जो है ना, हाँ, रिवॉर्डिंग नहीं फील होता वो. आप जितना भी काम कर लो, इट्स नॉट सॉर्ट ऑफ रिवॉर्डिंग. सो आपको ये भी बैलेंस करना पड़ता है कि सॉर्ट ऑफ एक इमोशनल जो फुलफिलमेंट आपको चाहिए होती है वो आप अपनी मर्जी का और अपने उस हिसाब से काम करके. और एक और अच्छी चीज पता है कि मैं ये सोच रही थी उस दिन, एक बड़ी कॉर्पोरेशंस के लिए आप जब काम करते हो या बड़ी कंपनीज के लिए काम करते हो, तो ऑब्वियसली द वेरी निट पिकी एज वेल, राइट. मतलब वो आपको हाँ, तो बहुत टाइम भी लग जाता है. मे बी दे पेइंग यू मोर, बट दे आर कंज्यूमिंग अ लॉट मोर टाइम. विद दीज स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली ये जेन जीयर्स की जो आप कह रही हो स्टार्टअप्स जो हैं, दे गिव यू अ लॉट मोर क्रिएटिव फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट एंड टू सॉर्ट ऑफ अप्लाई अपनी क्रिएटिविटी को सॉर्ट ऑफ अप्लाई करो, रादर देन वो जो established organizations हैं वो फिर आपको थोड़ा सा restrict कर देते हैं. Obviously उनका हर चीज पहले से defined होती है, so you have to work within those constraints, limitations, right? So one of the good things about working for these small startups, it takes maybe less time and more creative freedom. So that's also something that you should consider when making the decision. Working for free, don't let people exploit you if you're working for free. And उसमें फिर आपकी 100% जो है ना autonomy होनी चाहिए if you're working for free for someone else. जो भी आपको reasons हैं, but do reach out to Generation Z startups. It's actually you'll find a lot of connections इस तरह build होते हैं, और maybe you can have a role in that organization, और आपको future में वो profitable भी हो सकता है. तो You feel like an important part. और वैसे तो आप एक cog होते हो उसमें बड़ी organizations में, just one moving part, but with like smaller organizations आपकी impact जो है वो नजर आती है. और I've seen they acknowledge. I mean, how these guys, Wonder Women acknowledge you and Ajib Studios acknowledge you. It's really good for the self-esteem as well. तो ये बड़ा अच्छा रहता है. You have to put yourself out there. अब आप इतनी ज्यादा choice हो गई है मार्केट में, there are so many designers and you gotta put yourself out there. ऐसे नहीं कि आप बैठे होंगे और आपके पास जो है गोद में जो है वो business drop हो जाएगा, clients आ जाएंगे गोद में, आप बस बैठे और थोड़ा सा ऐसे नहीं होता. I noticed Generation Z do not like to work under people, under organizations that much. They want collaboration, sort of relationship with everybody. तो agencies को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, और उसको especially with the artists and designers, उसको as a collaboration लेके चलें तो ज्यादा बेहतर है. ज्यादा बेहतर रहेगा. हाँ, हाँ, मतलब कि अगर आप आर्टिस्ट का नाम बस दबा दोगे कहीं पे, और उनका कोई जैसे होता था पहले हमारे जमाने में, ऐसे ही होता था. आयशा कभी किसी आर्टिस्ट, कभी किसी ग्राफिक डिजाइनर का नाम कहीं नहीं आता था. वो बेचारा बस गरीब आदमी बस काम कर करके पागल हो जाता था, उसका नाम नहीं आता था, unless you're like the art director or something, and then obviously that's different. But like, exactly, not creatives का ना. हाँ, so it's good that you guys are more concerned about making yourself, like putting yourself out. ये तो बहुत अच्छी बात है कि acknowledge करें भाई, करना चाहिए. Why not, like acknowledge करें आप artist को. अच्छा, मुझे बताओ, before we wrap up, would you like to add something? मुझे याद है मैंने एक सवाल तुमसे बड़ा important पूछना था और मैं भूल गई हूँ वो सवाल. नहीं, मैं भूल गई. मुझे याद कराओ. मैंने तुमको अभी इंटरव्यू से पहले कहा था मैंने कुछ पूछना है important तुमसे. वो क्या था? About your creative journey was about क्या था? I totally forgot. WhatsApp पे मैंने तुमसे बोला भी था. Well, I did mention कि मैं कैसे डिजाइनर बनी थी, तो वो तो कवर हो गया.
कवर हो गया वो. Gotta pay bills, man. अच्छा, हाँ, ये किसने कहा है? If anybody else has any questions, please do. अगर हाँ, सबसे important चीज, because Aisha has been working for me. Obviously, sometimes she gets like she has too much on her plate. तो sometimes जो है ना, Aisha काम थोड़ा सा delay हो जाता है बाकी सब. But she is a very good designer, a very good artist. आप लोग अगर इसको creative freedom दें, तो I think अगर I don't know, मैं जरा selfish होना चाह रही हूँ. मैं नहीं, I don't want to put you out there, but she's available for work. अगर आपको काम करवाना है, you can check out her style, her aesthetic on her page. और वो बिल्कुल अवेलेबल है. अगर आप एक म्यूजिशियन हो, इंडी म्यूजिशियन हो, अगर आप कोई स्टार्टअप चला रहे हो, बिकॉज शी इज ऑल्सो अ मार्केटिंग स्टूडेंट, तो ये पूरी सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कर लेती हैं, डिजाइन से लेकर कॉपी, अंग्रेजी भी बड़ी सेट है इसकी. तो पूरा पैकेज आप अवेल कर सकते हैं. होपफुली यू गिव हर गुड मनी सो दैट शी हैज इंसेंटिव टू लीव मी एंड जॉइन यू. No, I won't leave you. Don't worry. But yeah, कोई एडवाइस है तुम्हारी फॉर पीपल हु इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन? उस बंदे का नाम बताओ, वो जो तुम okay, so I have 2-3 people who inspire me a lot. One is एक मैंने mention किया था, Magdal Lopez. So he and there's also another 3D artist, Beeple. His name is Mike Wilkinson. Yeah, Beeple. Okay, so his work is not like mine or something, but his journey inspires me a lot. He's a 3D artist who has been designing an artwork a day for 13 years for now. 13 साल से वो रोज एक artwork बनाता, रोज. And his work surrounds political art, and he's actually he's probably the richest digital artist living on earth right now. अच्छा. Yeah. Beeple. You should check him out. Yeah. Beeple. So he inspires me out. He doesn't talk philosophical shit. That's what inspires me. He's so down to earth. His NFT. I don't get this. NFT money inspires me. What does that mean? Yeah, okay. So NFT is a digital token through which you can buy crypto art, and it's auction होती है, but it's all in the digital world, and it's through digital currency. तो उसका जो artwork है, it recently got sold for $70 million. Did he get like hard cash, or was it like some digital currency? Through उसको तो $70 million ही हुआ ना, मतलब इस तरह था कि he put it up for $1, and of course the digital auction that takes place, it reached $70 million. तो यार, मैंने भी बनाना है digital art. सारा ये teaching ये भी तो है ना, people overlook his journey कि वो 13 साल से रोज एक आर्टवर्क बना रहे हैं, 13 साल से. And he's worked with people like Beyonce, Hillary Clinton, and he makes visuals for their performances. या Hillary Clinton की, हालांकि वो उसका critical art होते हैं, political art होते हैं, तो लेकिन they still hired him for opening ceremony में उसके लिए visuals बनाए थे. तो यहाँ पे तो आयशा थोड़ी लिमिटेशन है. यहाँ पे आप पॉलिटिकल आर्ट बना के देखो जरा. अगले दिन ना आप रहेंगे ना आपका आर्ट रहेगा. No, my artwork is not political, and I do not aim to make political art. हाँ, good. इसी तरह से रखो. Psychedelic और rave. I mean, that's जियो और जीने दो type strategy. Yeah. So that's. चलो जी. हमने 40 देखो, हमने सोचा था हम आधा घंटा करेंगे, बट हमने 45 मिनट कर ही लिया आखिरकार. चलो, थैंक यू सो मच आयशा, एंड दिस वाज अ लॉट ऑफ फन. अब मैं जो हूँ, आप आ जाएं और काम करते हैं. फॉलो आयशा का हैंडल है Ayesha.dzn. प्लीज टाइप इट, यहाँ पे लिख दो, ताकि अगर कोई Ayesha.dzn, ये मैं पोस्ट में भी डाल दूंगी. डू फॉलो हर, शी इज ओपन फॉर कमीशन वर्क. अगर आप
स्टार्टअप है तभी भी शी इज ओपन फॉर डिजिटल मार्केटिंग का काम। आयशा के साथ और भी लोग काम कर लेते हैं, सो इट्स नॉट लाइक शी कांट। एक टीम, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि यू शुड हैव योर ओन टीम, व्हिच इज ग्रेट बिकॉज यू ऑलरेडी डू हैव समबडी वर्किंग विद यू, राइट? सो हाँ, तो एक तरीके से मेरी कोशिश यही है कि आयशा जो है वो अपना सेटअप बनाए। लेट्स सी मैं कितने जल्दी अपनी कोशिश में कामयाब होती हूँ, बिकॉज इंशाल्लाह इंशाल्लाह ग्रेजुएशन से पहले पहले। चलो जी, थैंक यू सो मच आयशा। Thank you so much for teaching me. थैंक यू गाइस, Allah थैंक यू फॉर Hafiz. कमिंग। अल्लाह हाफिज।